वापस ये हो जाएगा. हाँ, स्काई इज द लिमिट. हाँ ठीक है, स्काई इज द लिमिट तो डिग्री भी वैसी आ जाएगा. स्काई इज द लिमिट. हाँ हाँ, उस वीक. एक्सक्यूज मी, डन. द लेटेस्ट यू विल सबमिट इज, सर बता दीजिए आप. चलेगा. कल ही उसको डिस्कशन पॉइंट मत कीजिए सर, क्योंकि मैं नहीं नो वन सेक. ही एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट वेरी करेक्टली टू मी. इफ आई इट हैज टू कम थ्रू मी, मैं बोला उसके आगे नहीं करेंगे. आई थिंक थोड़ा मे बी आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस, बट आई विल गिव द डेट, उसके आगे नहीं जाएंगे. और आई विल नॉट गेट इट एज अ डिस्कशन पॉइंट. प्लीज डिस्कस नहीं करेंगे. यू डिसाइड एंड फिनिश इट. ओके, बट डेट वगैरह ठीक है, टॉपिक जरा डिसाइड करो एंड देन स्टार्ट ऑफ. हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद प्राइस टू बुक वैल्यू. चलिए. Email submission or soft copy? Soft copy is better, no? I prefer soft copy. Huh? No, but one sec. Excuse me. इस पे एक ही I'll need your help. Somebody will have to, and Abhijit sir, I will request you to collect it and send it to me. इतना ही करना पड़ेगा. हाँ. Soft copy लीजिए. लेकिन it will be difficult if people submit at different times for me to keep track. So only humble request is एक साथ जमा करके आप मेरे को डाल दीजिए बिल. No problem, चलेगा. Soft copy done. 2 pages, 3 pages came from you, Ribu. I know that. No. Right? ठीक है. Right. Let's start with balance sheet. नहीं sir. You should open your mouth. ऐसा क्या कर रहे हो? Balance sheet. Price to book value, working capital management. Forecast. 3 things remain. Let's start. Balance sheet format. Assets and liabilities. First thing is, what is assets and what is liabilities? Let's start. Assets and liabilities. I'm not rubbing this part. Huh? Please copy it down. I need you to help me out. Right? Assets and liabilities. What is liabilities? Suppose what you owe. Okay. That's it. He's galat bola. Application of funds was right, but that is the answer for assets. Okay. Liabilities is source of funds. Assets is application of funds. मैंने question change किया आपके लिए. Don't worry. I asked for you. The question was what is assets. Okay. Right. Liabilities is source of funds. Right. Assets is application of funds. Here we go. एक साइड फटाफट निकल जाएगा. Assets. एक परवेज भाई बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. प्लांट, लैंड. अच्छा ठीक है, बराबर है. यू विल टॉक ऑफ रियल एस्टेट ओनली. लैंड. सेकेंड, मशीनरी. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. लॉजिक से जाओ भाई. उधर भी आप बीच में मशीनरी बोलते हो. पहला लैंड, फिर बिल्डिंग होता है. बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी होता है. उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर. ऑर्डर से जाइए ना. बीच में लैंड के बाद प्लांट एंड मशीनरी. फिर किधर रहेगा वो? डेसर्ट में रहेगा वो. राइट. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. व्हाट आर दे? लवली. फिक्स्ड एसेट्स. फटाफट निकल रहा है आगे. अभी करंट पे आएगा. फिक्स्ड एसेट्स. व्हाई आर दे नोन एज फिक्स्ड एसेट्स सर? रवि सर, व्हाई आर दे फिक्स्ड? बिकॉज दे आर फिक्स्ड. हाँ. इमूवेबल. Yeah, one time. Excuse me. Fixed assets. बराबर है, right? They are more fixed because they are used for a longer time. They are used for a longer time. I am now starting with yes. Furniture and fixtures. Furniture and fixtures. पूरा पैसा वसूल है आप लोग, right? Furniture and fixtures, right? Now we start with current assets. Sir, रुको ना मैम. Receivables, stock. Is there an easier way to communicate? ऐसा मत करो ना. हाँ बोलो शोना प्लीज. Within 1 year. Good. Accounting का एकदम फट करके बोल दिया. लॉजिक मेरे को आई एंजॉय. बराबर है, मैं बस्ती तो करता ही हूँ. 3 घंटे का क्लास है तो आई हैव टू कीप द मूड लाइट. इट्स राइट, बट आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज आई वांट लॉजिक. फॉर मी
current assets is short term, and I have got a simple way of explaining, that is a working capital cycle. I am now going to open out a working capital cycle. Can I rub this, sir? Huh? Can I have the list by tomorrow? कौन क्या कर रहा है? Huh? Okay. Current assets. सुने. Current assets go by working capital cycle. For me, what is the day-to-day business? Sir, logic. ये जो बोला शैलजा मैम, and I think some colleague here, I couldn't make out who's my turned my back. Stock, बराबर है, but go by logic. Raw material खरीदा. Day-to-day business क्या करते हैं हम लोग? Raw material. Converted into work in progress. Work in progress is then converted into finished goods. सर एक लॉजिक से जाएंगे ना, कितना सिंपल होता है फाइनेंस. फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड, सेल्स, मनी कम्स इन, इज अगेन पुटेड एज रॉ मटेरियल्स. अभी इस पे दो ब्रेकअप आएगा, राइट? द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन, बट सेलिंग, एज द कलीग सेड, you will rarely sell it on cash, right? Except for the oil economies, nobody is enjoying the monopoly now. Okay, so typically what you have is, take the product, pay me after 30 days, pay me after 60 days. Okay, we call it as receivables. At the same time, since I am giving you a term, Dhananjay sahab, you pay after 6 months. When I take material from Justira, I will tell her I'll pay her after 15 days, 20 days. So raw materials can be on cash. At the same time, it can be paid up after some time. If you see, very strategic, and I'm sure the sharp colleagues have noticed. मैं जानबूझ के debtors creditors नहीं लिखा. मैं जानबूझ के logic से गया and I put receivables and payables. Sir, I'm an engineer. I know the way I have come up. You know, ये सब छोटा-छोटा चीज़ है, but confuse हो जाता है. Now, if you understand receivables, payables, it becomes very easy to link the word debtors and creditors, which is a common source of confusion, right? When you're doing it for the first time. Debtors. What is receivables? What do you mean by receivables? Money is, right? That means you are in debt to me. You are indebted to me. Hari sir, you are indebted to me. You have to pay me after 30 days. Sir, you have to pay me after 60 days. Indebted to me. Okay? So this confusion will never happen if you go by concepts. Is debtors. Justina was giving raw material, right? She has given me credit. Okay, so here we go, right? It's creditors. If you understand this cycle, and I have not used a single word debt, right? Debit, credit. I always believe this. These colleagues put in 5-6 years, right? In getting a professional degree. In 2 months, an MBA can't compete with them, and I can't compete with them, and I should not with debit credit. But yes, finance is something you need to understand. That's important. So here is it. This is known as working capital cycle. This will form a part of your current assets. This will form of your part of current assets, and there will be something known as current liabilities. But before I get there, can you please take 2 minutes and draw the cycle? And get that clear, because now I'm going to start talking about working capital management. Any questions on the cycle? Deepak bhai, question for me? Huh? Now, you got the cycle. We'll talk about working capital management later. I'll need your help, okay? And I'll take this colleague's help. I'm sorry, I should. Huh. फुजेल साहब, मेरे को बताइए ना, स्टॉक, हैव यू अप्लाइड मनी ऑन इट? और मैंने एक सिंपल डेफिनेशन दिया, एसेट इज, इन्होंने बताया, एसेट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी, लायबिलिटी इज सोर्स ऑफ मनी. स्टॉक, उसके ऊपर पैसा लगा है कि नहीं लगा है? लगा है, तो दैट्स योर करंट एसेट. स्टॉक, फटाफट बोल दिया सर प्लीज. स्टॉक और राइट, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स. सर आप ही आगे बोलेंगे. डेटर्स, मेरा एग्जाम्पल में मैं धनंजय साहब को बेचा था. ओके, ही इज सपोज टू पे मी आफ्टर 6 months. मेरा पैसा अटका है कि नहीं उधर? लगा है. तो व्हाट